presentation. Thank you, ma'am. You all are students of management and you have understood about and read about marketing so much. So you all are aware about what exactly a brand is. Because it is not any kind of a logo or it is not any kind of a gesture that a particular organization actually try to fit in the mind of the customer. It is basically a kind of an emotion, a gut feeling that is being created in the mind of the customer through which you are able to actually connect with that particular brand. That's what basically a brand identity is totally all about. And that particular logo, the particular sign of that particular brand actually helps you to identify about which particular brand I am talking about. अगर मैं normally ये कहूँ कि इस तरीके का लोगो होता है तो तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिकली आने लगता है कि मैं एक नाइके ब्रांड की बात कर रही हूँ, ठीक है? I haven't even not talked about कि मैं यहाँ पे किसी शू का डिस्कशन कर रही हूँ या मैं आपके कौन से प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ. But yes, when we are actually trying to understand about the any identification of any particular brand and all, the particular pillars which we as an individuals or the customer are able to identify, we are able to identify with the color of that particular brand, ठीक है, with the logo of that particular brand की कौन से कलर पैलेट्स यूज किए गए हैं, किस तरीके का लोगो जो है उस पर्टिकुलर ब्रांड ने अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए क्रिएट किया है, उस पर्टिकुलर कलर्स के अंदर भी एक काइंड ऑफ मैसेज दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय द organization to actually create the particular brand building in the mind of the customer, through which you people become loyal, the brand become trustworthy for you, you are able to retain with that particular brand and all. So that's what exactly the power of brand is. For example, normally I used to give this kind of example in my class also. Normally हमारे को पता है कि yes, green marketing becomes a very common concept these days and all. Everyone wants to be in that particular organic marketing. They are actually trying to spread it out. So Bisleri was a particular brand in water industry or beverage industry which provided you the particular water with the logo that is totally green in color. ठीक है, अब उसी के अदर जो भी हमारे अदर ब्रांड्स हैं जो कि एग्जैक्टली बिस्लरी नहीं है, वो भी उसी पर्टिकुलर पैलेट को यूज करते हैं, उसका लाइटेस्ट टोन, उसका थोड़ा सा डार्केस्ट टोन एंड ऑल, जहाँ पे एक कस्टमर ये दूर से आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता कि आई एम बाइंग द पर्टिकुलर ब्रांड व्हिच इज नोन एज बिस्लरी और नॉट. दैट व्हाट द ब्रांड पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड इज टोटली ऑल अबाउट. कि वहाँ पर हमारे को दूसरे बिस्लरी का आर आई की जगह आई आर लिख दिया और हमारा ब्रांड, क्योंकि ना तो हमने कॉपीराइटिंग के ऊपर किसी भी तरीके का इन्फ्रिंजमेंट किया है, ना ही हमने किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की इमेज के साथ खेला है, हमने कलर भी डिफरेंट यूज किया, लोगों को साइन यू जाता हुआ की बजाय हमने यू भेज दिया एंड ऑल, एंड देन ऑल्सो वी आर एबल टू सेल अवर प्रोडक्ट इन द मार्केट. Why? The reason is that particular brand power of Bisleri, that the individuals are aware about this particular fact, ताकि हम अगर अपने न्यू लोगों के साथ मार्केट में अपने ब्रांड को सेल आउट करना भी चाहेंगे तो हमारी मार्केट में ना तो डिमांड इंक्रीज होगी और ना ही कस्टमर हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने की कोशिश करेगा. सो दैट व्हाट द रियलिटी ऑफ योर ब्रांड पावर इज. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट the creation of identity that is that and all, how a particular organizations used to create that. Why does not? So when you are actually trying to particular brand and all, you have to create the mission and vision. You have to identify the basic target audience for your organization. The competitive analysis is to be done by
the creation or the basic pillars when an organization is actually trying to create a particular brand and all. First you are talking about the logo design. You have to design something different and all, and that particular logo also have some kind of meaning in itself and all. Like Apple was being created and all. अगर आप उसकी इनिशियल लाइफ साइकिल भी देखोगे तो वो पहले डिफरेंट मल्टीपल कलर से इनिशिएट हुआ था, उसके बाद ब्लैक, लाइट ग्रे, डार्केस्ट ग्रे, एंड वो करते करते आज वो लाइटेस्ट ग्रे के ऊपर आ चुका है. That what Apple brand is totally all about. And every color which is being used by that particular brand, जो भी कलर उसमें यूज किया गया है, आज वो जो पर्टिकुलर ग्रे कलर है, that particular color speaks about the integrity, that particular color speaks about the royalty of that particular brand and all, and it have a different image in the mind of the customer. That what your logo designing is all about. The color palette evokes the emotions that you are going to actually align with the personality of that particular brand. How you are going to, what type of colors you are going to use in your brand and all. It has always a meaning. Right? Red color is considered as a color of passion. Red color is considered as a color of love and all. So normally अगर आप देखते हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो अपने आप को पैशन इन सारी चीजों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, या लव एंड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, या इवन हेट्रेड के साथ भी, because the color of the blood is also red and all. In all the particular sectors, everything which is being derived by these particular brands, they are using that particular color that is known as red. Fine. The reason behind the same is because that colors give the particular impact in you, like your Coca-Cola. It always, the advertisements which you used to see of that particular brand always speaks about the passion, the energy, the enthusiasm that is going to be increased by using that particular things, and also that what it is, the brand is being connected not only with the logo but it with the color also. Color is not only being used by any of the organization to only categorize the differentiation from this particular brand to that one, like Pepsi or Coke, blue and red. It is not only that particular meaning. They have the inner inside meaning of that particular brand which is being used, that it gives you a kind of message that why we are using this type of color in their particular message and all. Then your typography. Font size also matters for any organization, like in your cigarettes and all. Normally अगर आप अपने cigarette and all के brand पे देखोगे तो smoking is injurious to health. वो जितना छोटा लिखा जा सकता है हम उतना छोटा लिखेंगे, और हम उसे किसी भी तरीके का कलर देने की कोशिश नहीं करते. अगर हमारा पूरा का पूरा पैकेट कलरफुल हो सकता है तो वो पर्टिकुलर लाइनर जो है वो कलरफुल क्यों नहीं हो सकता. अगर हम उसे रेड के थ्रू मार्क करें तो वो ज़्यादा आइडेंटिफाई होगा. दैट इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड ऑल, एंड दैट विल डेफिनेटली डायरेक्टली इम्पैक्ट द buying capacity of any consumer and all. So that what it is, majorly the font size, the colors, what type of colors, how much catchy they are, what type of logo you are using, that basically actually helps you to create a particular identity of that particular brand and all. So that what it is, your visual identification. Shaping your brand voice and all. When you want to actually shape your brand voice, when you actually want to create any kind of creation or any kind of sustainability retention in the mind of the customer, then definitely you have to create this type of jingles, this type of messages and all in the mind of the customer, so that they are able to retain that particular brand for long and all. Like आजकल Coca-Cola किस नाम से फेमस है? हाफ टाइम. जो अभी का कैंपेन आया है कोका कोला का, दैट व्हाट इट इज इन द एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इट इज बीइंग शोन, दैट जब भी आपको ब्रेक चाहिए, एनी काइंड ऑफ हाफ टाइम एंड ऑल, दैट पर्टिकुलर ड्रिंक यू कैन इनकलकेट इन योर लाइफ एंड ऑल. अगर आप उसकी पूरी एडवर्टीजमेंट को भी विजुअलाइज करोगे तो उसके अंदर आपके डे टू डे कोर्स ही है. कोई
होती है, that is what a connection of the customer with the particular thing and all. So that what it is, the kind of voice which is very friendly and all, that type of message the organization try to give it all in this. और हमेशा कोई भी ब्रांड अपने आप को बनाने के लिए एक स्टोरी क्रिएट करता है. जब वो स्टोरी क्रिएट होती है तो वो कस्टमर के माइंड में ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहती है. जैसे डव ने भी अपने आप को जो है मार्केट के अंदर जब इनकलकेट किया था in 2003 and all, then they try to categorize that the particular brand which we are providing as a Dove, that is a real product in the market. They talks about the reality. ठीक है कि उन्होंने बेसिकली और अपने जितने भी कैंपेन्स रन किए वो भी इसी पर्टिकुलर टैगलाइन के ऊपर किए. So that what it is basically the storytelling and all. So when any kind of brand which is actually providing the particular identity or they want to actually create any kind of personality and all, then definitely an organization have to look after first at the time of designing the particular brand and all. They have to look after the logo designing, they have to look after the particular colors and all, then they have to look about that what type of message you are going to create with that particular thing. And when you are providing the particular advertisement as a particular brand in front of the customer, then your message should be clear and all. अभी जैसे मैं बोलूँ दाग अच्छे हैं, सब पता है किसके बारे में बात करते हैं. That what it is, the message which is being created by that particular brand, कि वो आपके माइंड में आज तक रिटेन है. ठंडा मतलब कोका कोला, पेप्सी क्यों नहीं निकलता? Why? The reason is the message which is being created by this particular brand, the identity which is created by these particular brands and all. और every time ये brands जो है अपने आप को market के अंदर retain करने के लिए they are running different category of campaigns and all. Like I use the example of Coca-Cola. Now it is the new campaign for 2025 is your half time and all. You can look after that particular advertisement also. So whenever you are going to create your message and all, always use very good colors and all. अब देखना normally cosmetics and all की advertisement में ज़्यादातर pink colors and all use किए जाते हैं. Even pink marketing has become a very famous concept in the marketing and all. अब एक ही particular toothpaste है market में sell out हो रही है for males और for females. सेम क्रीम यूज हो रही है लेकिन उसको अगर हमने पिंक कलर दे दिया तो उसको हम 70 रुपए की बेचते हैं और बाकी को हम 40 रुपए की बेचते हैं. मेल्स को हम 40 रुपीज़ में पटा देते हैं लेकिन फीमेल्स को वही चीज़ हम 70 रुपीज़ में बेचते हैं. Read the concept of pink marketing. Organizations are actually earning from this particular color also. कि अगर हम पिंक में यही सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएंगे तो ऑटोमेटिकली women are going to buy this particular thing. वो नॉर्मल प्रोडक्ट उठाएंगी ही नहीं और वही प्रोडक्ट जो मैं 40 रुपए में बेच रहा था वही मुझे 70 रुपए में मिलेगा. तो 30 रुपीज़ आई एम जस्ट only getting from that particular palette of the color that is known as pink. Fine. So when you are creating, then you have to actually look after